AI is now replacing the job every month. But there is one thing that AI can never replace. That's your child's unique career strength. The problem क्या है कि there's nobody discovered that, but I can help you to find out. एक आपसे क्वेश्चन है, इसके बारे में ऑनेस्टली सोचिएगा कि जो भी आपके बच्चे का करियर प्लान है, जो भी परसू कर रहा है, क्या 10 साल बाद 2035 में भी रिलेवेंट होगा, सेफ होगा या AI उसे रिप्लेस कर देगा। ये एक डर जो फियर है वो रियल है एंड अगर आप इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं तो दिस इज राइट टाइम टू थिंक अबाउट दैट। वो इसलिए क्योंकि एवरी ईयर्स अराउंड 1.5 करोड़ बच्चे जो है दे ग्रेजुएट फ्रॉम द कॉलेज एंड सो फार AI has already replaced around 37% of entry-level basic jobs, and further also it will replace the jobs which our children they are studying for, they are aspiring for. लेकिन एक चीज़ है which AI can never touch, that's your child's unique career strength, जो सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे के पास है, जो ह्यूमन स्किल्स है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली AI इज नॉट अ प्रॉब्लम जब होती है जब बच्चा कोई ऐसा करियर चूज करता है बिना अपने करियर स्ट्रेंथ को उसको जाने बिना उसको डिस्कवर किए बिना, जो कोई ऐसे ही करियर चूज करता है जिसमें डीप में नहीं जा सकता, देन इट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज AI कैन रिप्लेस दैट। लेकिन अगर बच्चा ऐसा करियर परसू कर रहा है जिसमें उसकी करियर स्ट्रेंथ है या डीपली इंटरेस्टेड है, तब उसको AI इम्पैक्ट नहीं करेगा बिकॉज उसी एरिया में चाइल्ड कैन गो डीप इनटू इट एंड they can adopt with their AI would not replace that. Hello, मेरा नाम एसन मौर्य है and I am master's from Bislani and executive management from IIM Bangalore with 28 plus years of professional journey across PSU, government, corporates. To be honest, मैंने भी 15 years तक ऐसी जॉब परसू की है जो कि अगर AI होता तो उसको रिप्लेस कर देता। When I discovered my career strength, then everything shifted. My job profile shifted, my confidence shifted, and also satisfaction shifted. Then I decided why not help this young generation, particularly in this AI era where they are under huge pressure. Because I spent around 15 years with grinding, burnout, lot of stress, health issues. I do not want our young generation to face the same. That's the reason I am doing it. Then I designed a framework I call is SME of goal. That is skill set, mindset, environment and goal clarity. Because the first thing is career goals should be aligned to the strength, interest and of course the value system. Once this is fixed, then we need the right skills to sustain in AI era. Then we require mindset, that is achievers mindset which adopts when there is uncertainty, when there is a pressure. And environment, we need a community-based environment which accelerates the growth of child without burnout, without much grind. एक मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे फ्रेंड्स की एक डॉटर है, शी वाज परसुइंग एट CA. देन व्हेन आई मेट हर, तो हमने पूछा क्या वाकई में आपका CA में इंटरेस्ट है? शी वाज जस्ट डूइंग टू सीक अ जॉब. नाउ एवरीथिंग फाइलिंग एक्सेट्रा, मोस्टली अकाउंटेंसी इज गेटिंग इनटू ऑटोमेशन, राइट? दैट AI is the replace. Then I guided her without deviating from her core domain, that is finance, accountancy. Then as of now, she is helping the people in the financial planning and wealth creation. That is unique for every person, right? That AI can hardly replace because everybody's situation is different. There are careers and skills which AI cannot replace. They are human centric. There's a link given below. I do free one-to-one strategy session around 45 minutes wherein we sit together, साथ बैठेंगे और we can discover the child's unique strength and unique challenges, and accordingly we can create a roadmap so that your child can build a right career without pressure, without burnout and faster. So see you there. Thank you so much.